start the class. Basically, we started central nervous system. In the central nervous system, we talked about multiple things about anatomy and physiology. Everything is in the box. You can see the playlist which I sent in the previous classes. So now we will talk about what are the boxes are given in the central nervous system. First, here is multiple sclerosis. Basically, what is multiple sclerosis? It is one of the disease which affected large number of peoples. So ये क्या है? एक तरीके का बीमारी है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम की एक तरीके की बीमारी। ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो आपका नर्व है, ये नर्व है, नर्व की जो ऊपर की कवरिंग है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। यानी ये इसको कहते हैं माइलिन शीथ। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। सो माइलिन शीथ इज damaging. Gradually it will reducing. So why we have myelin sheath? Because why we need myelin sheath? Because the signals will pass very rapidly. So myelin sheath क्यों रहते हैं हमें? इसलिए रहता है कि हमारे लिए कि हमारे जो सिग्नल्स है वो एकदम रैपिडली पहुंच सके हमारे फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। तो ये सिम्टम्स कब नजर आएंगे? 20 से 40 साल ये बीमारी में, 20 से 40 साल के दरमियान में अक्सर ये लोगों को बीमारी होती। क्या होता है वो तो बता दिया मैंने। क्यों होता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो एक ऐसा ही इन्फेक्शन हो गया बॉडी में नॉर्मल, जिसकी वजह से आपकी खुद की बॉडी अपने सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहीं पर भी अगर आ जाए, इफ एनीवेयर यू सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, व्हाट इज द रीजन इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। योर बॉडी सेल्स, योर बॉडी immune system is damaging your own cells. So you have number of diseases like that. Okay. So you understood multiple sclerosis. We can treat by in our electrohomeopathy by giving our medications, by applying and by applying to the solar plexus areas. Okay, and number of areas. It can improve the function of the body as well as internal you can give. And we have another option that is mm, uh, after electrohomeopathy, I can believe that it will cure the disease, that is acupuncture. Okay. By deeply studying the patient and asking the patient conditions, you can treat the patient. So this is multiple sclerosis. What is the next disease here in the box? That is shingles. Shingles is the virus caused by chicken pox. Okay. Why it is mentioned in the central nervous system? Because it can cause Bell's palsy. What it will call? It will cause Bell's palsy. That's the reason it is given in this central nervous system. So यहाँ पे ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो आपके बेल्स पैल्स यानी जो नर्व है फेस फेस को पहुंचाने वाला, वो नर्व सेवेंथ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। तो इस वजह से इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो नर्व डैमेज अगर हो जाए तो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे, यानी मसल्स जो जो भी यहाँ पे फेस पे है वो एकदम एकदम चेंजेस आएंगे। चलो हम देखेंगे एक बार फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी। देखिए ये है बेल्स पैल्सी। यहाँ पे आपको ये किस तरह दिख रहा है? इधर का, आप इधर का क्या दिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ का ड्रूपिंग माउथ है। ठीक है, ड्रूपिंग माउथ है। अब जब आंख बंद करेंगे तो पूरा आंख भी क्लोज नहीं होगा। ठीक है। तो ये सिम्टम्स नजर आएंगे आप। एसिमेट्रिक स्माइल, स्माइल करेंगे तो एक तरफ ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये क्यों हुआ? यहाँ से जो नर्व आया वो नर्व डैमेज हो गया।
So why this happened? Because of seventh cranial nerve palsy. Okay. So next box is spinal cord injury. So you know that we have the brain. Brain is the supreme organ of our body. This is the spinal cord. Okay. So if any injury occurs here, any part of the spinal cord, what will happen? The connection between those nerves will decrease. So that's the reason what will happen. You cannot able to function by those organs those are connected to the spinal cord. Okay. Example, if any injury occurs in the cervical region, what will happen? The correction below the cervical region is disclosed. तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेन है सुप्रीम ऑर्गन है पूरे बॉडी का. जो भी फंक्शंस होते हैं ब्रेन से होते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड होते हैं. ठीक है. तो बॉडी को इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. सो इफ इट इज डैमेज व्हाट विल हैपन. ये अगर डैमेज हो जाए तो कनेक्शन अगर टूट जाए तो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में या फिर जहां से कनेक्शन लूज हुआ है वहां के ऑर्गन्स आपको डिस्क्लोज मिलेंगे. ठीक है. तो यही बहुत प्रॉब्लम है. इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप ट्रैवलिंग करें इंजरी से बचे. खासकर स्पाइनल इंजरी. ठीक है. स्पाइनल इंजरी इज डेंजरस इंजरी. Okay. So this is the thing which is explained in this para. You can see that. And one more thing here is giving that now they are experiencing that to regain or regenerate the central nervous system cells means squam cells mostly by transplanted. Okay. By transplant in the rats and mice. Okay. So this is the reason is going on. It is not applied to the human body, but it is going on the rats, small animals. Okay. By stem cell therapy also is there. Because stem cells therapy means the cell which have regeneration capacity, it will inserted into your body and the body will get uh, the regeneration capacity. Okay. So this is the thing you have to understood spinal cord injury. Next, you have cerebrovascular accident. What is meant by cerebrovascular accident? Cerebrovascular accident means damage of brain. Basically, what happened? देखिए क्या होता है. ये हमारा ब्रेन है. ब्रेन को दो चीजें बहुत हमेशा जरूरी है. 24/7. 24/7 जरूरी है. 24/7 two things are very important. One is oxygen and another is nutrition. In the nutrition, mostly glucose. So it have to perform 24/7. That's the reason it needs these two things. If any one is shut down, what will happen? Brain cells likely to damage. Okay, likely to damage. Okay, so what will happen? It will not receive by two things. One is this is the arteries. In the artery, we have oxygen and nutrition. Both are there. Okay. If this artery is blocked by anything, any cholesterol like thing, plaque like thing. Okay, this is called thrombus. It's called thrombus. Thrombus is nothing but a clot, blood clot. Okay, blood clot in the artery. तो यहाँ पे आपके रगों में क्या हो गया, शरीयानों में क्या हो गया, क्लॉट हो गया. तो क्लॉट रहने की वजह से न्यूट्रिशंस यहाँ के ब्रेन सेल तक नहीं पहुंच रहे. तो अब देखिए ये रुकावट बन गई. तो इसको आप 3 to 6 मिनट्स में अगर इसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये ब्रेन का जो सेल है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा. और कोई सेल्स परमानेंटली डेथ हो जाएंगे, कोई सेल्स टेम्पररी डेथ होंगे. ठीक है. क्यों हुआ? यहाँ पे क्लॉट. सेकेंड रीजन इज द आर्टरी और वेन इज रप्चर्ड. व्हाट हैपेंड? रप्चर्ड. यहाँ पे क्या हुआ? आर्टरी और
रप्चर हो गई तो ब्लड यहाँ से बाहर आ, तो यहाँ पे सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, ब्रेन सेल्स क्या हो गए, इस ब्लड से बाहर आके यहाँ पे डैम, इससे इसके प्रेशर से वो क्या हो गया, डेथ होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपका जो ब्रेन है चारों तरफ स्कल से घुमा हुआ है, चारों तरफ से स्कल से घुमा हुआ है, तो इसको निकलने, प्रेशर से निकलने बाहर कोई चांस ही नहीं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख, इमेज देखते हैं दोनों का भी। अब सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के टू टाइप्स क्या है, इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक्स। देखिए इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आर्टरी से वेन्स है, देखिए आप देख सकते हैं ब्रेन है, ब्रेन के ये आर्टरीज और वेन्स है, यहाँ पे आके एक थ्रोम्बस आके जमा हो गया, जमा होने से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे थ्रोम्बस आके जमा हो गया तो ब्लड को सेल्स नहीं पहुंच रहे, या फिर यहाँ पे ब्लड का जो आर्टरी है वो आर्टरी ब्रोक हो गई, तो भी ब्लड बाहर आ रहा, तो ब्लड बाहर आके इसको कंप्रेस करेगा, प्रेशर देगा। दिस इज द कंप्लीट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड वेरी इजीली, दिस इज द नॉर्मल आर्टरी, नॉर्मल artery, this is the artery blocked artery. Okay, so the blood is not reaching the brain, so what will happen, the brain cell will die, the brain cell will die. Another type of, another type of stroke, that is hemorrhagic stroke. What is hemorrhagic stroke, you can see that this is the artery, this is artery ruptured, so what will happen, then the blood in the artery is releasing in the brain, what will happen, the blood will compress the brain, so then what happened, the cells will damage it. Okay, so this is the two types of strokes which are seen in mostly common people, but in the common, that is 80 to 90% we have ischemic stroke, means thrombolysis formed in the artery, and the 10% is hemorrhagic stroke. Okay, understood. And you can understood that if the clot is happened, अगर क्लॉट देखिए ब्रेन के जो हिस्से में हुआ है उसके ऑपोजिट साइड के फंक्शंस, फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, उसके उसके प्रॉब्लम क्या है देखने को मिलेंगे, जैसा कि लेफ्ट साइड के ब्रेन में अगर प्रॉब्लम होगा, लेफ्ट साइड के ब्रेन में, तो आपको राइट साइड के फंक्शंस, हैंड एंड लेग के कमजोर होंगे पेशेंट। अगर राइट साइड अगर होगा तो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग के मूवमेंट और बात करने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, लेफ्ट साइड अगर होता, राइट साइड होगा तो समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जिस एरिया में प्रॉब्लम होगा उस एरिया का आपको सिम्टम मिलेगा। अब रिकवरी कैसी है, हाउ इट विल रिकवर, रिकवरी इज डिपेंड अपॉन डैमेज, हाउ मच एरिया इज डैमेज, and other risk factors like the patient have diabetic, hypertension, or hypothyroid, any other complications which is affecting the patient, and age factor, if he is more than 60 years he will get problems. Okay, so this is the conditions about cerebrovascular accident. Okay, and sometimes it is fatal, means some patients will damage whole brain and they will die. Okay, if it is more danger it will come into the brain stem, because they are higher centers and they have respiratory center, cardiac center, heart rate center, every center. Because there's the reason, if they are completely damaged, what will happen, the centers are shut down and we are unable to take the breath, we are unable to take, heart rate is decreased, because these are the symptoms are seen. ओके, नेक्स्ट इज एफेसिया, एफेसिया इज ए कंडीशन, एफेसिया क्या है, कंडीशन है जिसमें आप बात नहीं कर सकते,
अब बात क्यों नहीं कर सकते? जो बॉडी का, जो ब्रेन का जो एरिया है, जो ब्रेन का जो एरिया है, वो एरिया डैमेज हो चुका है। ठीक है, जो एरिया है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग बात नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं ब्रोकास एरिया। लेट्स सी द ब्रोकास एरिया। This is the Broca's area. You can see this is the area, brain. Okay, this is the brain. You can see this is the complete picture of the brain. Okay, this is we have multiple areas. This is the Broca's area. This area is known as Broca's area. This is the Broca's area. Okay, so if this area is damaged, what will happen? The patient is unable to talk. Aphasia. So you can see that. And another thing is auditory aphasia. Auditory aphasia means the patient is unable to listen the words, and he cannot understood, or he cannot, if he want, if he listen, but he cannot able to express the words. This is also known as word blindness. Okay, so this is the things we can see in aphasia. The patient have speech difficulty and hearing difficulty और अंडरस्टूड डिफिकल्टी। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, इमेज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस एरिया में प्रॉब्लम आएगा उस एरिया आपका मुतासिर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये दिस इज द एरिया प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया, सेंसरी एरिया, इफ इट इज डैमेज व्हाट विल हैपन? मोटार फंक्शन विल affect. Here we have the speech area. The speech will affect. Visual area, visually will affect. Okay, and visual area. This is also every visual, secondary visual area. Okay, primary auditory area. If problem it is here, what will happen? Yeah, the patient is difficult to listen. तो ये सब चीजें ब्रेन के किस हिस्से में प्रॉब्लम होगा, वो हिस्से का प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नजर आएगा। अब पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? सर मुझे बात करने नहीं आ रहा, बात करने नहीं आ रहा, बोलेगा ये हाथ नहीं उठ रहा, हाथ नहीं उठ रहा। तो कितना भी एक्सप्लेन करो आप कि भाई प्रॉब्लम ब्रेन में है, हाथ में नहीं है आपके, तो वो कहेगा कि सर हाथ नहीं उठ रहा, फिर कहेगा। तो ठीक है, तो आपको समझना होगा प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन में है। ब्रेन से इंप्रूवमेंट अगर होगा तो हाथ खुद ब खुद उठेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो एफेसिया, नेक्स्ट इज अल्जाइमर डिसीज एंड पार्किंसन डिसीज and lumbar puncture. So these are the three boxes remain. Okay. So here we have the Alzheimer disease. Alzheimer disease in the United States. Alzheimer disease is a progressive, incurable form of mental deterioration. Affects approximately 5 million people and is the cause of 1 lakh deaths each year. The first symptom, which usually begin after 65 years, are memory lapses and slightly personality changes. As the disease progresses, there is total loss of memory, reasoning ability, and personality, and those with advanced disease are unable to perform even the simplest tasks or self-care. So, Alzheimer disease means degeneration of, same degeneration of our neurons. Okay, so it is the most common disease in the United States because of mental deterioration. Okay, and it affected 5 million people, and in a year 1 lakh deaths are seen. So यहाँ पे अल्जाइमर डिसीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये डिसीज ऐसी है कि ग्रेजुअली इंसान अपनी मेमोरी को खो देता है, अपनी सोच को खो देता है, यहाँ तक कि वो सिंपल टास्क जो करने हैं डेली के, चलना फिरना और किसी का नाम याद रखना, ये यहाँ तक भी हिल जाता है। ओके, तो ये बहुत डेंजरस थिंग है, जिससे पेशेंट ग्रेजुअली
डेथ के करीब पहुंच जाता है। ओके, सो दिस इज द वेरी important thing you have to remember during Alzheimer disease. And another type of disease, same like in the uh, elderly age, that is Parkinson disease. Parkinson disease is basal ganglia disease, but the cause is unknown. The patient's hands and legs will shake like this. Okay, so the patient is unable to move. So, coordination is missed. So जैसा कि हमारे अब मेरे हाथ है ग्रेजुअली ठहरे हुए, ये पेशेंट के क्या होंगे, हिलते रहेंगे हाथ। तो क्या ऐसा हिलते रहेंगे, पैर भी हिलते रहेंगे। तो बहुत ही एल्डरली पेशेंट डिसीज है। इसको ट्रीटमेंट मोस्टली क्या है, डोपामाइन वगैरह देकर करते हैं। ठीक है, एल्डोपा। ओके, एल्डोपा। ओके, so basically, but it is not much more effective, but sometimes it will control the tremors. Okay, ये कहा जाता है। So this is the diseases Parkinson and Alzheimer disease, very very dangerous during elder. Okay, so these are the diseases and boxes which are mentioned in the nervous system are completed, and one more box is there here, lumbar puncture. तो यहाँ पे और एक बॉक्स है lumbar puncture, जिसमें आपको ये देख सकते हैं कि आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड which is present in the ventricles along with the uh, dura mater, subdural, epidural, okay, along with spinal cord. So this is very very important to us to protect the spinal cord from the various bacteria infection. Okay, so we will remove the if anyone have cerebral fever और किसी पेशेंट को बार बार फिट्स आते हैं, रीजन फीवर के साथ फिट्स आते हैं, तो उनका लुम्बार रीजन से सैंपल कलेक्ट ये लिक्विड कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, या फिर कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार बुखार आ रहा है, बार बार उसको फिट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर है तो इसको हम दो चीजें कह सकते हैं। एक, इसको मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी ब्रेन की कवरिंग है, उस कवरिंग में इन्फेक्शन हो जाना, इसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। या किसी पेशेंट को सेरेब्रोस्पाइनल प्रेशर बढ़े हुआ रहता है। ठीक है, यानी सम पेशेंट्स हैव प्रेशर बिल्डअप इन द ब्रेन, so they have severe headache, intracranial hypertension, this is the name is given. So in that thing, the cerebrospinal fluid pressure is increased. So what will happen, it will roundly, it will circulate in the brain. Okay, circulate in the brain. So but so when is circulating, the pressure is increased, so what will, the pressure is compressing the brain, so the patient have headache, is complaining headache, I have headache, severe headache. So what they do, they will, in the modern medicine, they will release some cerebrospinal fluid, then the fluid is decreased and the pressure will decrease. Okay, so these are the things you can see during lumbar puncture. Okay, so this is all about central nervous system. So we completed all the topics in the central nervous system. Okay, so you have, everyone have here questions, review questions. You have to complete all these questions, 15 questions. Okay, you have to write down in the notes, and you have to, specially everyone, I am requesting that you have to the diagram of central nervous system. These are the important diagrams. If you draw it, you can remember it easily. Okay, these are the diagrams, cranial nerve diagrams. Okay, so everyone
Please do the homework. Okay. So here we have the questions, 15 questions. Please solve all the questions and send me the WhatsApp group. Okay. Next, you have some thoughtful questions. Thoughtful questions. Kindly give this answers also if you are willing to give it. Okay. So ये thoughtful questions है जो आपके सोच पे डिपेंड है. ठीक है. ठीक है. सो ये हमारा कंप्लीट हुआ. हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सेंस के बारे में. Okay, it is also related to the brain, so that is the reason we will continue the lecture. Sense senses. So in the senses we have this chapter. Okay, these are the chapters. Ear, eye, ear. These are the most common things we will study. If anyone have any doubt, you can ask.